So in the previous video we have learned about the rules of using a, the rules of using and now we are going to learn the rules of using the. The is definite articles. You know that? I already told you that the is definite. So the first rule of using the. So the is used before a definite noun which has already been mentioned. The कब यूज किया जाता है? The is used before a definite noun. मतलब definite noun जो हमें पहले से ही पता है कि वो उसी के बारे में हम बात करें. We are talking about that noun and which has already been mentioned. जो पहले ही mention हो चुका है paragraph में. Okay. For example, the lion is the king of beasts. So everyone know that the lion is the king of the forest, right? So we are talking that the lion is the king of beast. Means lion is definite noun here. Understand? Lion is definite noun here. So I am telling you that the lion. So lion is definite noun here. So we have used the in front of this lion. Understand? The lion is the king of beast. You understand that? Second rule is the is also used when the singular noun represents a class. The कब यूज किया जाता है? When the singular noun represent a class. जब कोई singular noun जो होता है वो class को represent कर रहा है. For example, the well, the rich, the poor means not just one poor, पूरे class को represent कर रहा है. Means जैसे rich है तो पूरे रिच क्लास जो भी अमीर है वो सभी उसमें आए. सो दैट इज क्लास. ओके. सो द वेल, द रिच, द पुअर. अंडरस्टैंड? नाउ थर्ड रूल इज द इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट शोज अ क्वालिटी. द इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव. द कब यूज किया जाता है? बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट शोज अ क्वालिटी. एडजेक्टिव के सामने जब वो क्वालिटी दर्शाता है. फॉर एग्जाम्पल, the blue sky, the winged carrier means, see, here is sky is noun and blue is adjective. Understand? Sky is noun and blue is adjective. So we have to use the in front of this adjective. Understand? And it is showing us quality. Blue sky. How is the sky? It is a blue sky. Like that, the winged carrier. Carrier means रथ. You see the carrier? So the winged carrier. Carrier कैसा है? Winged है. Means पंखों वाला. Understand? So winged is adjective here and carrier is noun here. So we use the before this noun, before this adjective. Understand? Now next rule is the is used before the superlative form of an adjective. The is used before the superlative form of an adjective. So you know the degrees. There are positive 3 degrees: positive, comparative and superlative. So in the superlative degree we have to use the. जैसे old है, positive is old, comparative is older and superlative is oldest. Okay, so this is superlative degree and we have to use the oldest while using this degree. Understand? Like that, the eldest and the most beautiful. Understand? So this is the fourth rule. Now we will see fifth rule. Fifth rule. See, the is used before the names of gulfs, rivers, seas, oceans, groups of Iceland and mountain ranges. So the कब यूज किया जाता है? बिफोर द नेम्स ऑफ गल्फ्स, रिवर्स. जैसे जितनी भी नदियां हैं हमारे देश में या फिर कोई भी नदी हो, सो इन फ्रंट ऑफ दैट रिवर्स, सीज. सीज मीन्स जैसे अरेबियन सी, लाइक दैट, एंड ओशियंस ऑल्सो, जैसे पैसिफिक ओशियन. सो इन फ्रंट ऑफ दैट वर्ड्स मीन्स पैसिफिक, द पैसिफिक ओशियन वी विल सी. ओके, द अरेबियन सी. सो ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड जैसे and mountain ranges जैसे the Everest, the Mount Everest. Understand? So in front of this nouns we have to use the. You understand that?
जैसे यहाँ पे द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी, द सहारा डेजर्ट इट इज, एंड द थेम्स दिस इज रिवर, एंड द पर्शियन गल्फ दिस इज गल्फ, and Atlantic Ocean this is ocean. Now next rule is the is used before the cardinal direction and common nouns that are unique. जैसे कोई यूनिक होता है मीन्स उसके जैसा कोई और नहीं होता है, देन वी हैव टू यूज द इन फ्रंट ऑफ दैट बिफोर दैट. जैसे द स्काई, सो कैन यू सी लाइक स्काई अदर थिंग? क्या आपने स्काई के जैसी कोई अदर थिंग देखा है? नो, स्काई इज यूनिक थिंग, सो वी हैव टू यूज द स्काई. अंडरस्टैंड? सो लाइक दैट द सन, सन के जैसा और कोई है? नो, सो वी हैव टू यूज द सन, the moon. Understand? So the mountain, the Venus. Now next rule is the is used before certain common nouns. कोई common nouns होते हैं निश्चित ऐसे certain common nouns, we have to use the before that. For example, the airport. Okay, this is common noun. Airport is the cinema, the railway station, and the bus stop. These are the common nouns, and we have to use some the in front of that certain common nouns. You understand then, students? Okay. Now the next part we will take in next period. Okay. Thank you.